book exercise of every chapter exercises. So this is exercise of chapter 8 eclipse. Okay, so let's start with the fill in the blanks. So first is the two type of solar eclipse are. So I told you about the two type of eclipse. One is a total solar eclipse and second total solar eclipse, and second is the partial solar eclipse. Total and partial solar eclipse. Second, artificial satellite are object that orbit the earth. I told you the definition of artificial satellite. Artificial satellite are man-made satellite. Man-made object that orbit the earth. A blank is used to carry astronauts and equipment into space. So you know this is spacecraft. Spacecraft. Next is astronaut have to wear special suits called space suits. Special suits that they wear, the astronaut, these are called space suits. Next is during lunar eclipse, the blank casts their shadow on blank. I told you about the lunar eclipse. Lunar eclipse क्या होता है? When the earth comes between the sun and moon, this condition is known as the solar eclipse. Here the earth casts their shadow on moon. So earth casts their shadow on moon. Unscramble the words to identify the name of famous astronauts. So this is also important. Let's scramble it. This is Yuri Gagarin. Next is Neil Armstrong. Next is William. Next is Sunita Williams. This is Williams and this is Sunita Williams. Okay, next is choose the correct answers. The blank is made up of 70% hydrogen and 28% helium. So I told you the sun is made up of 70% hydrogen, 28% helium and 2% other gases. Second is what was the name of the first spacecraft launched by NASA? So Pioneer 1 is the first spacecraft which is launched by NASA. The moon orbits the earth every 27.3, it means 28 days. Okay, earth की चारों ओर आपको पता है moon revolves around the earth and moons complete one revolution around the earth in 28 days. Okay, and the one rotation complete in 24 hours and one revolution by the earth complete in 365 days. Next is which of the following was the first artificial satellite to be launched to orbit the earth? That is Sputnik 1. Next is state the true false. Okay, so first is Yuri Gagarin was the first person to travel into space. So this is अभी हमने पढ़ा था Yuri Gagarin was the first person to go to the space. This is a true. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पहला पर्सन था जो ट्रेवल पे स्पेस में गया था, सो दैट इज़ यूरी गागरिन. अगर आपसे पूछा है फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून बाय जिसने फर्स्ट स्टेप रखा था मून के ऊपर, दैट इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग. So this is a little bit difference between both of the questions. So you have to understand this and not do the wrong question. Next question is solar eclipse can be harmful for our eyes. Yes, this is true. So we should not look the solar eclipse by the naked eye. Next is when we see very thin portion of the moon, this is called gibbous moon. Thin portion of the moon, that is gibbous. Thin portion जो छोटा सा portion आपको मैंने बताया था, न्यू कंडीशंस होती है हमारी न्यू मून, क्रिसेंट मून, गिब्बस मून, देन फुल मून, गिब्बस न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून and then full moon. Okay, these are the 5 conditions. So when we see thin portion of the moon, that is called
गिब्स मून जब आपको क्या देखते हो छोटा सा पोर्शन दिखाई देता है, दैट नो, इसमें क्या आपको हाफ से ज़्यादा दिखाई देता है, मोर देन हाफ पोर्शन से भी ज़्यादा। जो ये वाला पार्ट होता है ये विजिबल नहीं है और ये सारा पार्ट विजिबल है, दैट इज़ कॉल्ड गिब्स मून। We can see the gibbous moon after the 7 days of new moon. The gravity on the moon is around 1/6 the gravity of the earth. That is true. Okay, that is true. Number 9, earthquake and the natural disasters. So fill in the blanks को first है, blank is an opening or rupture in the crust of earth. So that is, this is volcano. Volcano is an opening or rupture in the crust of earth. Second is drought happen due to, आप सबको पता है सूखा पड़ जाता है किस लिए, ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन कॉज, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगी वहाँ पे, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। अ क्रेटर इज शेप लाइक अ, दिस इज शेप लाइक अ बॉल, एक बॉल जैसी शेप दिखाई देता है, आपको पता है ये आपका वोल्केनो, यहाँ पे जो क्रेटर होता है इट्स शेप लाइक अ बॉल। अ ब्लैंक इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। सो दिस इज सिस्मोमीटर, दिस इज सिस्मोमीटर। Seismometer is an instrument that detects the vibration caused by an earthquake. Next question is true or false? The layer below the earth crust is known as mantle. Yes, there are the 3 layers of earth. First is crust, second is mantle, and third one is core. So this is the outermost layer, this is the middle layer, and this is the innermost layer. So the layer below the earth crust, crust ke below, this is called mantle, this is called mantle. So this statement is true. Volcanic ash is basic in nature. No, we know and we have read this, the volcanic ash is acidic or abrasive in nature. So this statement is completely false. Mount Popa in Myanmar is an active volcano. So this is false, this statement is false because this is not active. This is extinct volcano. The name of hurricane in Japan is typhoon. Yes, this is true. The name of the hurricane in Japan is typhoon. True or false? Track your progress. Carbon dioxide is responsible for the global warming. So this statement is true. Yes, this is responsible for the global warming because they rapidly increase of the rise the level of water, then because of the global warming. So CO2 is responsible for the global warming. This is true. You should know the reason behind also. Breathing polluted air cause asthma. Yes, true. Land pollute result in infertile land. Definitely true. Loud music can noise pollution. Yes, loud music cause the land pollution. So right, the statement is true and wrong for the statement is false. Use large amount of water for bathing. No, this is wrong. Next, use plastic bag to bring groceries. Yes, this statement is use plastic bag. No, we should not carry the plastic bags. We should, instead of plastic bag, we should carry the paper bag. Use compost instead of fertilizers. हमें कंपोस्ट यूज़ करना. येस, दिस इज़ ट्रू. लिसन म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम. नो, दिस कैन क्रिएट अ नॉइस पॉल्यूशन. वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर्स. नो, इट कैन पॉल्यूट द वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज fill in the blanks. Glass building are used in blank to grow plants. Yes, glass building are used in cold weather. This is cold weather to grow the plants. First. Second, blank are substance that can cause pollution. So कौन pollution करता है? 2 pollutants. These are pollutants. Third is are used to increase the food production. आपको पता है ये food production कौन बढ़ाता है? These are fertilizers. Next is blank is non-biodegradable. Biodegradable substances are those. The biodegradable waste, a type of waste that can be decomposed by our living organism, and non-biodegradable waste, a type of waste that cannot be decomposed by
अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज हो जाते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम के बाद, दैट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय के बाद भी जो डिकम्पोज नहीं होते, दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक. हमारे प्लास्टिक को कितने टाइम तक आप मिट्टी में दबा लो या कुछ भी कर लो, वो उसके साथ मिलेगा नहीं, वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होगा सोइल के साथ. ब्लैंक इज अ ग्रीन हाउस गैसेज. सो बहुत सारे गैसेज है. मिथेन. सो यहाँ ऑप्शन में हमें है मिथेन. तो मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैसेज. फर्स्ट दिस इज चैप्टर नंबर 11, rocks. So fill in the blanks. Gneiss rocks contain blank which make it shine. So mica is used to make the rocks to make it shine. Second is blank is used to make the candles polish, that is paraffin wax. Paraffin wax is used to make the candles and polish. Next, hard coal give a great amount of smoke. जो hard coal होते हैं वो क्या होता है, बहुत सारा smoke produce करते हैं. माइनिंग शुड बी डन इन अ वे डेट प्रिवेंट. माइनिंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि उन्हें क्या करना, वेस्टेज से क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके. मेटेलिक मिनरल्स आर कोल. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ओर्स बोलते हैं, दैट इज ओर्स. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. मिनरल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. सो दिस इज ट्रू बिकॉज द मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक. येस, coal is a sedimentary rock. This statement is true. Marble is made from sandstone. No, marble is made from limestone. So this statement is false here. Anthracite forms the largest portion of world coal reserve. So this statement is false because this is not anthracite. This is lignite. Lignite is the largest portion of the world coal reserve. So this is false. Petroleum is also called the crude oil or black gold. So this is true. Petroleum is also known as crude oil and black gold. Next is unscramble the word to find the name of the rocks. ये कुछ words है जो unscramble है, तो हमें इनको क्या करना है, scramble करना. Unscramble the words to find the, unscramble करना है हमें इन्हें. Unscramble the word to find the name of rock. So this is granite. This is granite. This is pumice. This is shale. Next one is slate. And next one is gneiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After do this, count the numbers, count the letters कि करेक्ट है या नहीं है. कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, ऐसे ही नहीं सही लिख दिया, बट मैच करो सेम नंबर ऑफ बी हेयर और नॉट. ओके, दिस नेक्स्ट चैप्टर, दिस चैप्टर इज 12, सॉइल. टेरेस फार्मिंग इज डन इन hills. Erosion is done in to reduce the soil nutrients. Conservation example of conservation is soil conservation embankment, and crop rotation is ground nut मूंगफली. Assessment John. The first is, this is a chapter soil. Which of the following is present in soil? So rocks, remains of dead plants, microorganisms, all are present in soil. So answer is all of these. Next is layer of soil are known as, we know the layer of soil is known as weathering. No. Rocks, no. Soil profile or topsoil, no. So answer is soil profile. Next is which of the following layer of the soil has humus? आपको पता है टॉप सॉइल. सब सॉइल में नहीं होती, बेड रॉक सबसे नीचे लेयर होती है, मिडल लेयर होती है. सो आंसर इज टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में हमारी humus प्रेजेंट होती है. Which of the following help conserve soil? So terrace farming is a method which help to conserve the soil. Deforestation is cutting down of trees on a large scale. Grazing by animals. Overgrazing is an example of soil erosion, not conservation. Plugging is also example of soil conservation. So how to conserve the soil? By the terrace farming. Next is, in which of the following reason soil erosion is maximum due to rain? So this is
Answer is heel. Heel, hilly area are the reason the soil erosion is maximum due to rains. So next question is true and false. Pedogenesis is the process of formation of soil. True or false? So this statement is true. Pedogenesis is a study of process of formation of soil. Next is the lowermost layer of soil is called humus. So false. अभी हमने पढ़ी थी topmost soil, not lowermost. Next is windbreak help in preventing soil erosion. So this is true. So this is an example of preventing soil erosion. We should not bare the soil for soil conserving. This statement is false because we should not leave the soil bare for the soil conserving. So this statement is false. This statement is false. The layer of the soil is called the soil profile. अभी हमने पढ़ा था. The layer of soil is called soil profile. So this statement is true. Next we have to level the diagram. So this is humus, and this the soil is the topmost layer of earth where plant can grow. Okay, so in the topsoil humus is present, and the top layer is called topsoil. Then below the topsoil, the subsoil. Subsoil is the middle layer of soil. And last one is this is bedrock. जब आप 6th क्लास में प्रमोट हो गए होरिजन्स में आ जाएगा, ओ ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन, सी ओरिजन, डी ओरिजन, ऐसे करके. ओके, सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. So soil provide all the blank that plant need to grow. तो soil क्या provide करती है? Nutrients provide करती है plant को grow करने के लिए. So answer is nutrients. Next is blank help to increase the porosity of soil. Soil की porosity कौन increase करता है? These are microorganism help or enhance the porosity of soil. Next the blank contain large pieces of rocks. अभी देखा था किसमें था? This is bedrock. This is bedrock. Bedrocks contain a large pieces of rock. The process by which topsoil is carried away. So this by wind, this is known as soil erosion. Soil erosion. Blank and blank are the two important agent of soil erosion. These are wind, soil erosion में बहुत important role play करता है, and water. Wind and water are the two important agent of soil erosion. So this is a chapter matter. So do you know what is matter? Anything which occupies space and have some mass, this is called matter. All the matter is made up of tiny particles. These are called molecules. Volume, size and shape, mass, color and density are the properties of matter. What are the properties of matter? Exam में आते तो आप लिखोगे the volume, size and shape, mass, color and density are the properties of matter. And the molecules are made up of atom. Atom is the smallest unit of anything. Okay, so try to progress. Salt is made up of blank type of atom, that is Na, sodium plus chloride. The two, sodium and chloride, two type of atom salt is made up of. Blank is the amount of space an object occupies, so that is volume. Volume, देखो volume और mass क्या होता है? Mass, how much quantity of something, how much weight of something, and how much the amount of space of an object occupied, this is called volume. Next is molecules can be further broken down into the atom. किसमें broken down हो जाते हैं? These can broken down into the smallest unit, atom. Progress. Answer in one word substitution. Neither have fixed shape nor volume. किसका होता है? Gases. Gases have neither fixed shape nor volume. When liquid state is converted into gaseous state, जब आपकी लिक्विड स्टेट को हम गैसियस स्टेट में, मतलब कि आपके वाटर को चेंज इनटू द वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. वेपराइजेशन. नेक्स्ट इज लिक्विड डेट मिक्स विद ईच अदर. जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड. लिक्विड molecules that are packed tightly and held strong forces. By strong forces, that is solid. This is true and false. First is molecule are made up of atom. So this statement is true. Molecules are made up of atom. Next is breaking a pencil into two pieces. A chemical change क्या होते हैं?
Chemical change, when you burning a paper, it changes into ash. Burning requires the heat. Okay, so change in which new substances form. So this is called a physical change. Physical change वो होता है जब एक नया प्रोडक्ट आता है आपके पास. ओके, जो नया सब्सटेंस बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. ये क्या होता है, इरिवर्सिबल नेचर होते हैं, मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता. तो आप जब आप पेंसिल को ब्रेक कर दोगे तो 2 पीसेज में वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप उसको दोबारा उसी स्टेट में ला सकते हो, दोबारा जोड़ सकते हो. नहीं जोड़ सकते, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज. फॉल्स. Chemical change can be reversed, not chemical change cannot be reversed. This is irreversible in nature. Hydrogen is soluble in water. Yes, this is true. Hydrogen is soluble in water. Oxygen give fish to sip. No, this is false. CO2 give fish to soft drinks. Next is blank and blank are soluble substance in water. So sugar and salt आर सोलूबल इन वाटर. दोनों क्या करते हैं, वाटर में सोलूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज इन अ ब्लैंक चेंज. क्या है ये, फिजिकल चेंज है. दिस इज अ फिजिकल चेंज. चेंज ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर इज अ फिजिकल चेंज. वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं. वाटर को वाटर वेपर से वो डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द सॉलिड स्टेट. लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. ये क्या होता है, हमारा फ्रीजिंग होता है. लिक्विड डेट मिक्स विद ईच अदर, जो मिक्स हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. दीज आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. टाइप ऑफ द फोर्सेज फॉलोइंग सिचुएशन. ओपनिंग अ डोर बाय पुलिंग विद योर हैंड्स. विच फोर्स आप पुल करो, दिस इज योर मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स. अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, दिस इज अ किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से. सो दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इज आयरन नेल इज अटैच्ड टुवर्ड द मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. अ पीसेस ऑफ रबर रिलीज्ड बाय अ कैटapult, सो दिस इज अ इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स. चैप्टर 14 फोर्स. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन. वेज होता है जिसके 2 इंक्लाइन प्लेन होते हैं, 2 इंक्लाइन प्लेन होते हैं, उसको वेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेल, जो आपकी कील होती है उसमें भी ऐसी थोड़ी सी ऐसी होती है. नाइफ भी देखते हो आप, बिल्कुल ऐसे ही बना होता है आपका. सो दोनों में क्या होते हैं, 2 इंक्लाइन प्लेन. वेज, नेल एंड नाइफ आर द एग्जाम्पल ऑफ वेज. पुली, एलिवेटर इज एग्जाम्पल ऑफ पुली. आप एलिवेटर्स पे ऊपर लिफ्ट पे चढ़ते हो, जो एक्सीलरेटर्स होते हैं उसमें आप देखते हो बीच में गोल गोल लगा होता है. फिशिंग रोड देखते हो आप में, उसमें गोल गोल सा होता है, वो तो एग्जाम्पल होगा फिशिंग रोड. एलिवेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुली. लेवर, हैमर, नट क्रैकर, नंबर ऑफ एग्जाम्पल. नट क्रैकर, हैमर, नट क्रैकर, bottle opener. Okay, so these are the example of lever. Inclined plane, ramp and slides, जो ऐसे होते हैं. These are inclined plane, ramp and slides. Next is wheel and axle. Wheel and axle क्या होता है हमारा, wheel and axle के examples होते हैं आपके door knobs. आप जो गोल गोल होता है ना, जो अपना दरवाजा खोलने के लिए ऐसे ऐसे घुमाते हो, so these are door knobs. Door knobs. Examples of wheel and axle. Bicycle pedal and steering wheel. These are an example of wheel and axle. So next is, let's go to the fill in the blanks. A nutcracker is an example of which kind of lever? Nutcracker कौन सा lever होता है? Class 1 lever. Blank is an ability of energy is an ability to do work. So a force can move इसको मूव कराते हैं moving object को. Force can move nutcracker. A nutcracker is an example of class 2 lever, not class 1 lever. Class 1 lever is plier, hammer, and class 2 lever is nutcracker, stapler. Okay. Call the blank which are provided in all the hospitals. So this is ramp.
Ramp is provided in all the hospitals to the carry the peoples from up and down. A moving vehicle has mechanical force due to its this is due to its motion. Answer is motion. Match the following: solar energy, solar cooker. Wind energy, this is turbine. Okay, so next is screw. Screw is a nail having grooves. Elastic energy किसमें होती है? Mechanical energy exerted by the machines. Elastic energy stretch strings of a bow.